ये प्रधानमंत्री के पास गए, सीधे सीधे शब्दों में कहा, अगर हिंदुस्तान के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पहली से लेके 8वीं तक की पढ़ाई नहीं कराओगे तो ये पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज सेइंग हिम, इतने सीधे सीधे कोई कहने वाला था ही नहीं कभी। पीपल गो देयर फॉर देयर ओन वर्क्स, दे फ्लैटर। इज सच ए मैन। नमस्कार। Very important moment for Sahitya Academy, rather historical one. Our respected former President Professor Chandrasekhar Kambarji, Professor I become so emotional at that moment, Vice President of Sahitya Academy, Rao Sahab and all the friends. Really, for me it is very emotional and sentimental attachment with Kambar Sahab, because when he was president, I was vice president. And those 5 years, I learnt a lot. He taught me in such a way, no parent, no mentor can teach you. With a smile, he said, in Sahitya Academy, you can do the things in such a way without propagating yourself. Such a sincere, great man. Last week I was in Moscow. So many elderly persons came to meet me and told that in 80s, Chandrasekhar Kambar was there. He delivered lecture and we saw his plays also. That was fantastic. And after that, no dramatist influenced us in such a way. This is the greatness of this man. Everybody knows. He is not a Kannada writer. He writes in Kannada, but he is Indian writer. Indian writer of eminence. Everybody knows him. His plays in English published by Penguin. His play in Hindi, Mahamaya. So many people of Hindi belt and English, they are all ardent followers and admirers of Kambar Sahab. When Rao was reading this paper, you would have realized that a man of pen, man of camera, man of theatre, man of folklore, every aspect of sensitivity, every aspect of expression is a complete literature. In India, we have novelists, we have dramatists, we have storytellers, we have poets, but all apart. Poet is a poet, dramatist is a dramatist. All genres of literature resides in that great man. संपूर्ण साहित्यकार, हिंदी में हम कहते हैं कि संपूर्ण साहित्यकार आजकल नहीं होते, ये संपूर्ण साहित्यकार। कैमरे की आंख से भी देखते हैं, कलम से भी लिखते हैं, फोकलोर से भी लिखते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वेरी फ्यू पीपल शायद जानते हैं या नहीं जानते। वंस he told me that I am going to meet Prime Minister to tell him that all the elementary education should be imparted in vernacular, in their own mother tongue. And he went there. He has such a guts. इतना विनम्र आदमी और इतना अंदर से शक्तिशाली आदमी you cannot find. I have seen genius, but so many geniuses of India are imbalanced person. Such a great man. ये प्रधानमंत्री के पास गए,
सीधे सीधे शब्दों में कहा, अगर हिंदुस्तान के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पहली से लेके 8वीं तक की पढ़ाई नहीं कराओगे तो ये पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज सेइंग हिम, इतने सीधे सीधे कोई कहने वाला था ही नहीं कभी। पीपल गो देयर फॉर देयर ओन वर्क्स, दे फ्लैटर। He's such a man. So many incidents I remember when he taught me so many things. And Sahitya Academy is still trying to materialize those visual he has given to us. उन्होंने एक हमारे सामने रोड मैप भी रखा। Once he told me that whenever, एक और बात है, फोक ट्रेडिशन से आया हुआ कोई भी लेखक, बिल्कुल मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी लेखक, उसमें 2 गुण होते हैं। He has 2 characteristics. He is down to earth, very polite. मैंने कभी इनको जोर से बोलते नहीं देखा। साहित्य अकादमी में there had been so many incidents when the heated exchanges of the thoughts were there in the meetings. He always smiled, and after that debate, he just uttered one line and the matter is settled. एक लाइन बोलते थे और मसला खत्म हो जाता। तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यवान समझता हूँ कि इतने बड़े विद्वान के साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और दूसरी बात यह है कि जैसे राव साहब ने बताया कि जो पोएट होता है is really a great poet, and only the poets can bring poetic justice to the society. He is really a spokesman of common man. कन्नड़ा का जो सामान्य आदमी है, ये उसके आशा निराशा के प्रवक्ता हैं। जब भी आप इनको पढ़ोगे, you will find that Indian literature is really so simple, so sensuous, and so pleasure giving. Sometimes I think that मैं कभी कभी सोचता था जो बहुत रेवोल्यूशनरी होते हैं वो लोग ज्यादा बोलते हैं, वो वाचाल बहुत होते हैं, लेकिन जो समाज को बनाने वाले होते हैं वो बात कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। He is the first man perhaps who is fellow of the Sangeet Natak Academy also. 3 in 1 rather. लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं। इनकी फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले नेशनल लेवल के। तो जो बड़ा लेखक होगा वो चाहे कलम से लिखे या कैमरे से देखे, सेलुलाइट पे लिखे या कागज पे लिखे। और सबसे बड़ा काम इन्होंने हम्पी में when he started Kannada University, Kannada language finds its place and importance by that institution. उस इंस्टीट्यूशन से निकले हुए इनके स्टूडेंट्स की प्रिपेयर ए लिस्ट and you will find that all those scholars are throughout India and throughout the world. You will find whenever I goes to anywhere, someone comes, sir, I'm student of Kambar. Then I tell him I'm also a student of Kambar, drama for old age. We pray God, भगवान इन्हें खूब स्वस्थ रखे, खुश रखे और इसी तरह से सेवा करते रहे पूरे समाज की, देश की। In honor of his, I'm reminded of Frost's poem. Words are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thanks.